I am Mrs. Abha Mukherjee. I have recently undergone a successful total knee replacement. It is 3 months now and I feel like my old self again. Today, I climbed, walked the stairs, took the elevator and visited Dr. Dharmendra, Director, Orthopedics in Medanta at Lucknow. He was as happy to see me as I was grateful to see him. I had not used my walking stick, wheelchair or even the lift. I needed them no more. I remember when my husband would take me to various hospitals and doctors and each would tell me to go in for this total knee replacement. I never listened to them, nor to my friends and family. I couldn't even sit and watch TV with my children because of my knee condition. I would run away, never at all agree or decide to go for the total knee replacement. Then I met Dr. Dharmendra, who explained to me in such a manner that I agreed. को घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था, चल नहीं पा रहे थे। मैंने एक्सरे कराए तो एक्सरे में हमें पता चला कि इनके दोनों नीज़ घुटने के जोड़ पूरी तरीके से ख़राब हो गए हैं, इसीलिए चल नहीं पा रहे थे। हमने इनसे सर्जरी की पॉसिबिलिटी पे डिस्कस किया। हमने इनको सर्जरी के लिए सजेस्ट किया कि अगर आप अपने दोनों नीज़ का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा लेते हैं तो आपका पेन चला जाएगा और आप वापस फिर एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। इनका वज़न भी ज़्यादा था, इसलिए थोड़े हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन बाद में हमारे और इनके बीच में जब कुछ और वार्तालाप हुआ और डिटेल डिस्कशन हुआ सर्जरी को लेकर के और इसके आउटकम को लेकर डिस्कशन हुआ तो फाइनली ये तैयार हो गई सर्जरी के लिए। And today I am back to my normal life, able to do so many more things nicely. Initially, I was very apprehensive because I was more than 100 kgs and 68 years old, very spoilt, uncooperative and demanding. But Dr. Dharmendra would look at me as Vivekananda would look at his disciples when they would argue with him. He nursed me back, helped me come back to a normal life. हमने इनके दोनों नी रिप्लेसमेंट किए हैं और रिप्लेसमेंट के बाद जो पोस्ट ऑप रिहेबिलिटेशन पीरियड होता है वो भी हमारी टीम के साथ ही हुआ है और सर्जरी के बाद अब ये पूरी तरीके से चल सकते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और इस दौरान जब इन्होंने चलना शुरू किया, अपनी एक्टिविटीज़ दोबारा रिगेन करी, तो इन्होंने जो सब्सटेंशियल चीज़ इन्होंने जो करके दिखाई है, इन्होंने वज़न भी कम किया है। तो ओवरऑल इनको सर्जरी के बाद से जो इनकी सारी दिक्कतें थी घुटने के दर्द की, चलने में, खड़े होने में, अपनी रोज़ की दिनचर्या करने में, उसमें इनको बहुत आराम मिल गया है और वो अपनी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। Here I must make the mention of Dr. My therapist, Dharmendra, who is the head of the department of the physiotherapy at Medanta in Lucknow. He helped me back to this normalcy and I am grateful for it. India has taken a leap forward in the medical field as well as surgery. Doctors are the best doctors we have in the world today, and many from abroad are coming here for help. So I tell you all not to shy away from the help that you can receive here. Instead, I am sure after the surgery, you people will be able to lead a much better life more confidently and do everything nicely. Before I end, I must say I am ever so grateful to Dr. Dharmendra and his entire team of doctors, nurses, therapists, sisters and assistants. I pray to God for His blessings and their well-being always. Thank you.